तो आज कुछ नया चीज पढ़ेंगे। राइट। किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि सर वर्क ग्रुप एंड डोमेन का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। राइट। इज ही प्रेजेंट? Yes, sir. क्या नाम है आपका? क्या नाम है? टेल मी योर नेम। विनय। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज वर्क ग्रुप एंड व्हाट इज डोमेन। रफ आइडिया होगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने डोमेन ज्वाइन करना सीखा होगा, सर्वर पे डोमेन में सिस्टम कैसे लेते हैं। दैट यू हैव डन इट। ओके। बट you have some unclear picture in your mind, so let me clear it. Okay. So let's start. Right. Work group means a individual computer. Okay, simple. There is a no system. Okay, that is the individual computer. Okay, whatever the things you want to change, you have to change it in each and every computer. For an example, ये देखो, पहले समझो ध्यान से। राइट। सिनेरियो को समझो। सपोज दिस इज अ कंप्यूटर। हियर वन मोर कंप्यूटर। हियर ऑल्सो वन कंप्यूटर। And all three connected through the LAN cable with the same LAN, right? ये राउटर और इससे तीनों कनेक्टेड। All three is connected with the router. Okay. This is your router or a Wi-Fi, whatever antenna. ठीक है। So these computers are under work group. Okay. So these computers are under work group. So if I want to change anything, right? Suppose I want to change a wallpaper. Hmm? Then I have to change that wallpaper in this computer also manually. फिर इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा। ओके। तो हमें क्या करना पड़ रहा है? मैनुअली करना पड़ रहा है हर चीज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसमें जो अकाउंट है, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया है। राइट। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा अकाउंट का नाम है जैसे एडमिन। राइट। यहाँ पे मान लो मैंने एडमिन के अकाउंट से चला रहा हूँ ये कंप्यूटर। एडमिन इज द यूजर इन दिस कंप्यूटर। Admin is the user in this computer. Here also, in this computer, suppose root is the user। रूट के नाम से अकाउंट बनाया है। इधर मान लो मैंने टॉम के नाम से अकाउंट बनाया है। टॉम। So in work group, what happened? If I want to log in this computer, then I need this password. This password is only, this ID password only work on this computer. Okay. रूट का आईडी पासवर्ड यहाँ पे नहीं चलेगा।
root का ID password is going to work on this computer only. Right? Tom ID password is going to be work on this computer only. Or what you need to do if you want to use the ID password, same ID password in all the computer, then you have to make a single ID password. जैसे कि अगर मान लो मुझे यही आईडी पासवर्ड से इसमें लॉगिन किया और इसमें भी लॉगिन करना है, तो आपको एडमिन से ही अकाउंट बनाना पड़ेगा इसमें. Come and make a admin account over here, put the same password, then only that password is going to be work. Similarly for the Tom also. Okay. And if I want to reset the password, okay, if I want to reset the password, if I'm going to reset the password in this computer, that password is resetted only this computer, right? This computer have the older password only. तो अगर आपने कहीं एक जगह रीसेट कर दिया और चाहोगे कि दूसरे पे चल जाए, तो इट विल नॉट वर्क. तो वर्क ग्रुप में आपको जो भी करना है इंडिविजुअल करना है. ओके, अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. हम्म. अब चलते हैं डोमेन में. थोड़ा सा डोमेन में बताता हूं इसका मतलब क्या होता है. डोमेन कंप्यूटर इज centralized managed, right? It is managed by centralized system. Okay, so centralized system, how it is managed? Suppose this is your AD server. Okay, जो कि आप लोगों ने ADDS पढ़ा है, उसी में डोमेन सर्विसेज में आपको AD, DHCP, DNS ये सब सब आपने पढ़ा है, right? So suppose this is your AD server. Okay, and here you have a computer, right? And this computer is connected with this server, right? Connected with this server. Connected with server ऐसे नहीं बनाओ. Let it. ऐसे बनाओ. Make a router over here. Network, right? This is a router or a switch. Networking device. Same scenario बना रहा हूँ. Connected. It is also connected. And this computer is also connected with the router. And this is connected with this AD. Okay. An antenna रह गया इसका. Let's make an antenna. Okay. Now in domain, what happened? Suppose I want to change a wallpaper in all this computer. I can change it here in Active Directory and push the policy. It is going to be reflect to all the computer. Suppose here I have created one ID. Okay. Here I have created one ID, Tom. Right. Tom के नाम पे एक ID बनाया. And I want to log in with this computer, it will work. This computer, it will work. For this computer, it will work. Tom can log in into all these three computers. But same thing not happened in a work group. Okay. If you want to create an admin account, right? Or any user, suppose any user come to your organization, right? New user come to your organization. Suppose Binay join this organization, right? Binay का ID password बना, ठीक है? Binay can log in into this computer also, this computer also, this computer also. Okay. Binay is a user of that organization. So जहां पे भी नॉर्मल कंप्यूटर रखा है, स्पेशल सर्वर को छोड़ के
राइट, जहां पे आपको परमिशंस नहीं है। बहुत जगह पे क्या होता है कि आपको परमिशंस नहीं दिया गया रहता है, इसलिए आप वहां लॉग इन नहीं करते। बट जहां भी आपको परमिशंस होगा, you can log into it without sharing a password, without asking any ID password from the other one, right? You can log in with your ID password. Understood? But here, if I am going to create a Binay account in this computer, और जब विनय को इस कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा तो नहीं कर सकता, बिकॉज विनय नीड अ रूट अकाउंट, बिकॉज विनय का अकाउंट ही नहीं यहाँ बनेगा। यहाँ पे अकाउंट ही नहीं है विनय का, कैसे लॉगिन होगा? यहाँ तो सिर्फ रूट का अकाउंट है। लेकिन डोमेन में क्या होता है, डोमेन में जैसे ही आप लॉगिन करोगे, इट विल क्रिएट योर अकाउंट ऑटोमेटिकली इन द सिस्टम। अंडरस्टूड? यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द डोमेन अकाउंट। अंडरस्टूड? सपोज आई वांट टू पुट सम पॉलिसी, राइट? अब मुझे मान लो यूट्यूब ब्लॉक करना है, फॉर एन एग्जाम्पल आई वांट टू ब्लॉक अ यूट्यूब इन ऑल द कंप्यूटर youtube.com। आई वांट की तरफ से डिसेबल द वीडियोज यूट्यूब। मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 10 लाख कंप्यूटर हो चाहे 1 लाख हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव टू हिट वन कमांड, राइट? दैट्स इट, अप्लाई कर दूंगा पॉलिसी, सबका बंद हो जाएगा। जाऊंगा मैं ग्रुप पॉलिसी पे, इम्प्लीमेंट करूंगा एंड अप्लाई इट। जैसे अप्लाई करूंगा ग्रुप पॉलिसी, जैसे कंप्यूटर सबका टाइमिंग आएगा रीस्टार्ट करने का, जब ग्रुप पॉलिसी अपडेट होने का टाइमिंग आएगा, 2 घंटे 1 घंटे में पॉलिसी, ओके, ऑटोमेटिकली यूट्यूब बंद, राइट? द यूट्यूब इज गोइंग टू बी डिसेबल। इस कंप्यूटर में अगर आके मुझे बंद करना पड़ेगा, तो इस कंप्यूटर में अलग से यूट्यूब डिसेबल करो, इसमें अलग से डिसेबल करो, इसमें अलग से डिसेबल। देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड डिसेबल सिस्टम। So that is the difference between work group and domain, right? Apart from that, और भी बहुत सारे डिफरेंस है, ठीक है? और भी बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक। अब ये वर्क ग्रुप में है तो आप लोग सोचते होंगे कि सर ये अलग अलग है, तो क्या हम रिमोट ले सकते हैं? यस, वर्क ग्रुप में भी आप रिमोट ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इस कंप्यूटर से रिमोट लेना है, कंप्यूटर 1 से रिमोट लेना है कंप्यूटर 2 का, तो आपको कंप्यूटर 2 का आईडी पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? देन ओनली यू कैन टेक अ रिमोट ऑफ दिस, बिकॉज जब रिमोट मांगेगा तो आपको यही रूट का ही आईडी पासवर्ड डालोगे तभी लॉगिन होगा। इफ यू वांट टू पुट द एडमिन आईडी पासवर्ड, नहीं लॉगिन हो जब तक एडमिन का अकाउंट इसमें क्रिएटेड नहीं है। तो अभी यहाँ पे तो एडमिन का अकाउंट है नहीं, सिर्फ रूट का अकाउंट है, तो आपको सिर्फ रूट का अकाउंट का आईडी पासवर्ड होगा तभी आप इसका रिमोट ले सकते हैं। बट इन हियर देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। भला ही ये टॉम का कंप्यूटर है, टॉम एक्सेस कर रहा है, राइट? बट विनय कैन टेक अ रिमोट, विनय भी ले सकता है, और विनय को टॉम की आईडी पासवर्ड की जरूरत भी नहीं है। विनय अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके ले लेगा। विनय अपने आईडी से लॉगिन करेगा एंड गेट द रिमोट। वेरी सिंपल। Sir, suppose while blocking YouTube, there comes a information from management that people at director level they want to watch YouTube. यस। Okay, so can we keep
Can means what is the procedure? Is there any Yeah, way to that is keep a that is very exception? that is very easy procedure, right? That is very easy procedure. Do you know what is a OU and what is a group? Do you know the difference between OU and a group? No, sir. No? Do you know what is a tree and a domain? नहीं पता, राइट? चलिए, कोई बात नहीं, मैं हूं तो टेंशन नहीं है, बताता हूँ। चलो, ये समझ में आ गया, ये क्लियर कर दूं थोड़ा सा। Yes, yes, sir. हम्म, ठीक है, बट आई नीड दिस डायग्राम, राइट, लेटर ऑन। चलो, मेरे पास एक पीपीटी है, लेट मी ओपन दैट पीपीटी। आई विल टीच यू दैट पार्ट आल्सो। ओके, चलो, सबसे पहले let's discuss this part, right? This is a very important, and lots of guys is confused between this. What is active directory and domain controller? ये बताओ, फिर मैं आपको जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो मैं बताऊंगा। डू यू नो द डिफरेंस? व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन कंट्रोलर? Sir, could you please explain this, sir? This would be हम्म really helpful. हम्म चल, मैं बताता हूँ, लेट मी। व्हाट हैपेंड, एक्टिव वर्क ग्रुप में तो ये सब कुछ चलता नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर, कुछ भी नहीं चलता वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप मीन्स आपके पास जो लैपटॉप है, जो डेस्कटॉप है, जिस पे आप काम करते हैं, वो हो गया वर्क ग्रुप। ठीक है, उस पे आपको जो करना है खुद ही करना है। ठीक है, दूसरा बंदा आके कुछ नहीं कर सकता। तो वो हो गया वर्क ग्रुप। डोमेन में क्या होता है, आपका कंप्यूटर है तो क्या हो गया, मैनेज कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर, इंफ्रा टीम वाले। हम्म आप सीईओ है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं चाहूंगा तो यहां से बंद कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। ठीक है, अगर कोई परमिशन देना है, कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेटर देगा, परमिशन दे देंगे। हम्म उसको जो चलाना है, अनऑथराइज्ड साइट भी चलाना है, चला सकता है। मैं बैठा हूं, मैं परमिशन दे दूंगा, चला सकता है? लेकिन मैं परमिशन बंद कर दूंगा, कुछ भी नहीं चला सकते, कुछ भी नहीं चला सकते, राइट? तो वो इज द बॉस। आईटी टीम वाले के पास बहुत पावर होता है, पता है? ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाओगे तो आपको पावर का पता चलेगा। बड़े बड़े मैनेजर, राइट, वीआईपी, एवीपी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये चला दो, ये चल नहीं रहा है, ये मेरा डाटा बैकअप कर दो ना। बड़े प्यार से बोलेंगे आपसे आके। So, sir, lot of chances to develop professional network. हाँ, राइट। तो वहां पे ये नहीं कि वो एबीपी है, पूछ रहा है तो आप ईगो में आ जाएंगे, मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। बट दैट इज यू, मतलब देखोगे आप कि आपके बिना वहां पे कुछ भी नहीं। बड़े बड़े मीटिंग, ठीक है, बहुत बड़ा मीटिंग है, मान लो आज शेयर मार्केट का मीटिंग है, राइट, सीईओ बैठेगा, शेयर मार्केट के साथ टीवी पे जाएंगे, लाइव जाएगा। ठीक है, मीटिंग चल रहा है इन लोगों का पूरा ग्लोबल लेवल पे, वो आईटी टीम के बंदे को बुलाएगा वहां पे। मीन्स यू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ध्यान से काम करोगे और कान खुली रखोगे, आंख और कान खुली रखोगे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का एक एक चीज जान सकते हो। राइट, आईटी टीम के पास बहुत पावर होता है। हम्म लेकिन जब उनको काम नहीं होगा तो उतना वैल्यू भी नहीं देगा। ठीक है, चलिए, अब मैं बताता हूं आपको एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है और डोमेन कंट्रोलर क्या होता है। पहले वो जान लो, बिकॉज उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप लोगों को मेन चीज ही नहीं पता है, बिगिनिंग ही नहीं पता है। ठीक है, चलिए बिगिनिंग स्टार्ट करते हैं। देखो,
Active Directory, you have learned it, but you don't know what is the function of Active Directory. Active Directory stores all the information, right? Like user information, right? System information, right? Resource information, files and folder information, right? So Active Directory, when a user is going to be joined, you are going to create an account on Active Directory. Means all user ID password is stored on the Active Directory. All computers information is stored in the Active Directory. जितना भी कंप्यूटर है डोमेन में which is लाइव, उसका सारा इंफॉर्मेशन एक्टिव डायरेक्टरी में. ओके, जितने भी प्रिंटर सर्वर्स हैं ऑल रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन इज इन एक्टिव डायरेक्टरी. ओके, जितने भी फोल्डर्स शेयर फोल्डर्स वगैरह है ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्टिव डायरेक्टरी, right? So Active Directory is a database where you stored all the user information and the resource information, object information. तो इसीलिए Active Directory को डिफाइन जब करते हैं तो इट कंटेन्स यूजर आईडी, यूजर आईडी का इंफॉर्मेशन रहता है, आईडी पासवर्ड एंड जितने भी रिसोर्स होते हैं सबका इंफॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो दैट इज द एक्टिव directory. White color selected. Okay. Active directory. Now, एक्टिव डायरेक्टरी तो सारे इंफॉर्मेशन रखता है, सब डाटाबेस पे रहता है. अब आता है डोमेन कंट्रोल. व्हाट इज द रोल ऑफ अ डोमेन कंट्रोल? ये डोमेन कंट्रोलर एक तरह से चौकीदार है, राइट? एक तरह से ये बाउंसर है जो गेट पे खड़ा रहता है, एक तरह से ये दरवान है जो गेट पे खड़ा रहता है. ठीक है, अगर आप इसको लेमन लैंग्वेज में समझोगे तो ही जस्ट है ना गेट कीपर, राइट? एक गेट कीपर की तरह बिहेव करता है, गेट पे जो खड़ा रहते हैं, राइट? कि कुछ भी चीज अंदर जाएगा और वहां से बाहर आएगा तो इसके परमिशंस के बिना नहीं हिलेगा. ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर का रोल क्या होता है कि जैसे अब मान लो टॉम टॉम ने लॉग इन किया इस सिस्टम पे. ओके, and if Tom is using a correct user and password, then domain controller allow him to log in into the system. If Tom is using a wrong user ID and password, domain controller will deny him to log in into the system. Deny कर दे कि भैया रॉन्ग आईडी पासवर्ड आपने यूज किया है, तो डोमेन कंट्रोलर इज नॉट गोइंग टू अलाउ यू. ओके, if Binay wants to log in into the system, Binay have to put the right ID password. जो भी उसका ID पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी में है वही ID पासवर्ड उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा. So domain controller verify the ID password from active directory. If it is matchable, then only it is going to give you a permission to enter into that system. Understood? इतना ही नहीं, सिर्फ आईडी पासवर्ड नहीं, और भी बहुत सारी चीज. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज द सर्वर, right? And this is a highly confidential server. Okay, this is the highly confidential server. Okay, and the organization give that right. Tom is the senior engineer or a manager, so Tom have the access to this system, right? But Binay do not have access to this system. So when Binay try to log in into the system, domain controller reject him because Binay do not have a permission. Okay, Binay do not have a authorization, right? So authority and authentication, the two thing is going to be done by the domain controller in a domain system.
authorization and authentication. Authorization word and authentication is different word. Authorization means do you have authority to enter into it? आपके पास राइट्स है क्या ये इस चीज को एक्सेस करने का? दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन. ऑथेंटिकेशन, ये बंदा ओरिजिनल है क्या, ये आईडी पासवर्ड ओरिजिनल है क्या? दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन. So domain controller perform two types of role, one authorization and one authentication. Okay, so once you entered into the organization, on any system, not organization, any system, you have to put the correct ID password. And if you put the correct ID password, but you don't have authority to that property, you are unable to access to that property. तो जैसे कि अगर मान लो आप लोग मान लो कहीं पे कोई फेस्ट में गए हो, राइट? फेस्ट में गए हो, वहां पे दो कॉन्सर्ट चल रहा है, ठीक है? मान लो फॉर एन एग्जांपल आपके पास पास है, राइट? आपके पास पूरे फेस्ट घूमने का पास है, बट एक स्पेशल वहां पे कॉन्सर्ट चल रहा है जिसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा. दैट कॉन्सर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दैट पास, राइट? तो क्या आपको उस पास पे वो घुसने देगा? नहीं घुसने देगा. बट आपके पास था परमिशन, आप फेस्ट में घूम सकते हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते हो. क्यों नहीं जा सकते हो? क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा. मीन्स यू नीड अनदर ऑथराइजेशन देयर, राइट? तो ऐसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो वहां पे जो डोमेन कंट्रोलर होगा वो क्या कहेगा? ठीक है, तू इधर घूम, इधर नहीं आएगा, इधर भटकाना ठीक नहीं है, राइट? इधर हम नहीं घूमने देंगे तुमको. तो जो वहां पे जो बाउंसर रहेगा, जो वो गेट कीपर रहेगा, वो आपको देखेगा कि दिखाएगा टिकट दिखाओ. अगर आपके पास टिकट नहीं है तो एंट्री नहीं करने देगा, राइट? आप वहां से बाहर निकाल दिया जाओगे, राइट? लेकिन जब आपके पास टिकट है, दोनों का पास भी है और उस कॉन्सर्ट का अलग से आपके पास स्पेशल टिकट जो आता है वो भी आपने परचेज किया है, कोई नहीं रोकेगा. यू कैन एंटर इट, राइट? तो ये ही डोमेन कंट्रोलर का काम है. अंडरस्टूड? Sir, इज इट क्लियर? नहीं, पहले yes, sir. रुको. प्रॉपर्टी समझ में आया दोनों का, एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन कंट्रोलर का? एवरीवन अंडरस्टूड इट? बिकॉज बीइंग एज अ सर्विस डेस्क इंजीनियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बिना आप लोग सर्विस डेस्क पे एक भी काम नहीं कर सकते जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. नहीं तो आप लोगों का सब डेली का टिकट यहीं पे आके अटक जाएगा. मीटिंग में पूछ देगा, ये सब चीजें पूछ देगा, तो आप अटक जाओगे. तो ये एक चीज क्लियर हुआ, एक्टिव डायरेक्टरी एंड डोमेन कंट्रोलर. Yes, sir. Sir, can I say something like what I've understood हम्म. regarding this? हम्म. Uh, so, like, suppose on my floor, we have 100 computers. So, हम्म. Active Directory provides centralized access. So, it हम्म. means on all the 100 systems that are on my floor, I can go and I can put my login ID and password and I can access my account. That is Active Directory. But outside that floor, हम्म. means somewhere near my floor, we have our senior manager's office cabin, हम्म. and they have their system. And when I go inside that means his office and I try to log in, I won't be able to do the login, right, sir? That is Yes, because of domain controller. Because on that particular property, on that particular system on device, yes, my because ID password is authentic or means original, but I don't have access to that system, right, yes, sir? yes, because you don't have that much of experience, you don't belong to that group, so that's why they are not giving you the given as permission, right? फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप विनय विनय ने आज आज ही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ठीक है? तो उसके एक्सेस को, उसके आईडी को भी परमिशंस नहीं है. दे कांट लॉग इन इनटू द एनी सर्वर. डोमेन कंट्रोलर में लॉग इन नहीं कर सकता, एक्टिव डायरेक्टरी में भी नहीं लॉग इन नहीं कर सकता, बिकॉज विनय को परमिशंस नहीं मिला है अभी. विनय सिंपल क्या, वो अपना एक्सेल पावर पॉइंट चला सकता है, यूट्यूब चला सकता है, वीडियो देख सकता है, जो भी काम है वो कर सकता है. लेकिन अगर उसको
सर्विस डेस्क के ऑपरेशन चीजों को काम करना है, जैसे कि डोमेन कंट्रोलर, डीएचसीपी पे लॉगिन करना, डीएनएस में लॉगिन करना, राइट। उसके जो अपना एफटीपी है वहां पे लॉगिन करना, राइट। तो ये सब का एक्सेस अभी विनय को नहीं मिला है। अब विनय ने 7 दिन 8 दिन का जब ट्रेनिंग कंप्लीट किया, 15 डेज का ट्रेनिंग जब कंप्लीट किया, जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके सर्टिफिकेट सबमिट किया, देन दैट टीम, राइट, इज गिव हिम एक्सेस, राइट। जहां पे भी सबमिट करना होता है तो वो टीम ने इनको एक्सेस दिया, ठीक है, यू आर अ सर्विस डेस्क इंजीनियर नाउ, लेट्स लेट मी गिव यू द ऑल द परमिशन व्हाट द सर्विस डेस्क हैव। और आप विनय को सर्विस डेस्क के सारे परमिशंस दे दिए गए, राइट। विनय का नाम सर्विस डेस्क के ग्रुप में ऐड कर दिया। अब विनय का नाम जब सर्विस डेस्क के ग्रुप में ऐड हो गया तो विनय गेट दैट ऑल पावर। Now Vinay can log in into the Active Directory. Now Vinay can log in into the FTP. Now Vinay can log in into the other systems also, which is used by the service desk. Understood? Now clear? समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब आते हैं हम लोग, अभी हम लोग किस चीज पे क्वेश्चन कर रहे थे? विनय ने क्या क्वेश्चन पूछा था? विनय, कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन? परमिशन Yes, कुछ ईओ वाले कुछ बताया था ना आपने क्वेश्चन, टेल मी अगेन। sir. The initial question was like, we want to keep certain computers exclusive out of that policy that anyone can access. So then you started explaining Active Directory and domain controller. Okay. Like when you explained Okay. Active Yeah, Directory, I I, asked you I, like I got your how. question. I got your question. I remind. So you think that कि हमने YouTube block किया है, but there is a CEO want to this YouTube access in his computer, right? That is the question. Exception. Okay, that is possible. Exception is possible, right? Now, why I have started from Active Directory and domain controller, because this is the link up thing. Now, in Active Directory, there is an OU. Okay. Why I am saying all this? Because all are interrelated. Okay. So in Active Directory, there is an OU. Okay. What that OU means? OU means organizational unit. OU. Organizational unit. किधर चला गया इसका? Okay. That is the organizational unit. What is the use of this organizational unit and why we are going to create it? Why we create an organizational unit? Okay, let me explain first. Active Directory have a huge database, right? And it is very difficult to manage. Okay. So what administrative do? They create a OU, a smaller unit of a Active Directory. Okay. Inside Active Directory, they create a OU, OU1, OU2, OU3, right? And that OU is generally created by the physically means location wise. Basically location wise create कर देते हैं, झंझट थोड़ा कम रहता है. Most of the case it is created location wise. For an example, your organization is in USA, in India, Singapore, right? Canada, Britain, Germany, right? So in Europe also, you have your organization is there. In Asia also, your organization is there. In America, your organization is there. So you can create a OU by continent wise, or you can create it by country wise, right? Whatever is easy for you, you can create it. Okay. तो OU के अंदर ही एक एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ही OU क्रिएट होता है. एंड OU में क्या करते हैं कि फॉर एन एग्जांपल, इन एक्टिव डायरेक्टरी सपोज आवर कंट्री इज इन इंडिया, राइट? सो इंडिया में ही हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि दिल्ली की जो ऑफिस है और मुंबई की, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, 4 जगह पे मान लो ऑफिस है, राइट? एंड देयर इज एन ह्यूज नंबर ऑफ अकाउंट, राइट? ह्यूज काउंट है, दिल्ली में भी बहुत सारे हैं, मुंबई में भी, बैंगलोर में भी, एंड हैदराबाद में भी. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, राइट, फॉर एक्टिव डायरेक्टरी.
guy, right? So what did they do? Active Directory guide, segregate it, create a OU, create one OU for Delhi, one OU for Mumbai, one OU for Bangalore, and one OU for Hyderabad, right? And the Hyderabad systems are kept under that OU. Hyderabad's users kept under that OU, right? Hyderabad servers kept under that OU. Similarly for Bangalore also, similarly for Mumbai also, similarly for Delhi also. So what happened? The responsibility is given to the AD guy, right? So AD guy, who is managing that AD, that guy have the EG, right? EG administration, right? So that they have a less number of employee, less number of computer, then they can easily monitor it, and any policy they want to push, they can easily push that policy. And the organization also have a some liberalization, right? थोड़ा सा फ्रीडम मिल जाता है कि अब मुंबई वाले कुछ अलग करना चाहते हैं तो दे कैन डू इट, राइट? उसको दिल्ली से डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अब मान लो दिल्ली में मान लो मैकैफी एंटीवायरस चल रहा है, तो मुंबई वालों को अगर मान लो मैकैफी नहीं यूज करनी है, जैसे कि दिल्ली का ऑफिस पुराना था, तो जब दिल्ली में हमने लाइसेंस खरीदा मैकैफी का, तो उस टाइम पे सस्ता था मैकैफी, तो वी परचेज द मैकैफी, राइट? बट मुंबई का ऑफिस 6 महीने बाद हमने ओपन किया, और मुंबई के ऑफिस में बहुत मैकैफी जब खरीदने गए लाइसेंस, तो उसने बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिया, और मुझे उसी रेट पे, राइट, उससे हाफ एंड रेट पे मुझे क्राउड स्ट्राइक मिल रहा था मार्केट में, वो भी एंटीवायरस है, या मुझे क्विक हील मिल रहा था मार्केट में। तो मैंने क्या किया, मुंबई के ओयू के लिए, मुंबई के सिस्टम्स के लिए मैंने क्विक हील खरीद लिया, राइट? तो क्विक हील की पॉलिसी अलग होगी एंड मैकैफी की पॉलिसी अलग होगी। सो मैकैफी हैव द डिफरेंट पॉलिसी, क्विक हील हैव द डिफरेंट पॉलिसी, बिकॉज वी हैव परचेज अ क्विक हील फॉर द मुंबई सिस्टम्स, right? So we can put our policy, Mumbai's policy is different and Delhi policy is different. So there is a freedom for both the location. Even Hyderabad can choose another software, another antivirus. They can keep their own policy, right? So they have some freedom. So what happened when you build an organization inside the Active Directory organizational unit? So you have some freedom to choose a policy, because policy always implemented on the organizational unit, right? पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड ऑन ओयू, ये चीज सबसे पहले लिख लो, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा बंदे कंफ्यूज होते हैं। उनको जैसे पूछा जाता है ग्रुप पॉलिसी कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, तो वो फटाक से बोल देते हैं ग्रुप पे, नाम पे चले जाते हैं, बट ग्रुप पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जीपीयू, जीपीओ जो भी होता है, जिसको कहते हैं ग्रुप पॉलिसी, इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड स्पेलिंग सही है, इम्प्लीमेंटेड, ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड ऑन ओयू। But sir, super control would be of the main Active Directory, right, sir? Yeah, from main Active Directory you can do anything. आपको हटाना है वो पॉलिसी, मर्ज कर देना है वो यू को, यू कैन मर्ज इट। एक्टिव डायरेक्टरी के पास फुल पावर है, ओके? बट हमारे पास, हमें जब वर्क करना है, वी हैव टू वर्क अप ऑन इट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, अब सपोज फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू पुश अ पॉलिसी on a single Active Directory, right? But there the user is from a Hyderabad and user is from a Bangalore, user is from a Delhi. So implementing a Delhi policy on all the system, right, it will be little bit unfair, because they have some their own software something, right? कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर भी यूज करता है, कोई कुछ और भी यूज करता है, तो आपको यू नीड टू गिव दैट परमिशंस टू दैट गाय, राइट? बट दिल्ली गाय डोंट नीड द लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइट? अब हिंदी इंग्लिश में चलेगा, ओके, बट हैदराबाद के गाय डोंट नो हिंदी, सो दे हैव
need the translation. Okay, some of the users in organization they need English to Hindi translator. तो ऐसे चीजें बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपको पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है, तो यू कैन पुट दैट पॉलिसी अपार्ट, राइट। अब जैसे यूएसए की पॉलिसी है, सो यूएसए की पॉलिसी इज डिफरेंट। ओके, if you want to get the downtime in a server, right? If you want to create a downtime in a server, if you have to start a maintenance on a server, then you have to, the timing is different, right? The timing is different, working hour is different, so you have to put your policy, you have to put your schedule accordingly. ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी शेड्यूल ये सब इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, देन ओनली इट इज फिजिबल। अब इंडियन टाइम में अगर आपने वहां पे कोई चीज इंप्लीमेंट की और बोला चेक करो, तो देर विल बी नो वन टू चेक इट, राइट? देर विल बी नो वन टू चेक इट, पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, कौन बताएगा आपको? हु इज गोइंग टू टेल यू? यूएसए में सब सो रहे होंगे अभी, राइट? सो नो वन इज देयर टू एक्नॉलेज योर इम्प्लीमेंटेशन या कुछ भी। अब कल कल जब आप सो रहे होंगे नाइट में, तब उनका आधा से ज्यादा सिस्टम बंद पड़ा हुआ रहेगा, फिर कौन करेगा ठीक अब उसको? हम्म। अब आपने मान लो कोई पॉलिसी पुश कर दिया जिसके वजह से, राइट, दिल्ली के कंप्यूटर तो अच्छे से चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आया आपने रेक्टिफाई करके अपलोड कर दिया, अब वही पॉलिसी आपने यूएसए के सिस्टम पे ठोक दिया। अब रात में कोई चेक करने वाला नहीं था यूएसए में, जब सुबह में जब हमारी इवनिंग टाइम हुई 8-9 बजा, तब उधर लोगों ने लॉग इन किया, यहाँ पे ऑफिस में कोई नहीं, सब घर गए। और वहां के आधे से ज्यादा सिस्टम बंद पड़ा है, ऑन ही नहीं हो रहा है पॉलिसी की वजह से, राइट? देयर इज अ पॉलिसी, ड्यू टू दैट द सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नाउ हु इज गोइंग टू टेकन केयर ऑफ इट? मैनेजर ने कॉल किया अपनी टीम को कि भाई देखो, so that is not fair, right? You have already done 9 hour work in a day. Now again you get a job in a night also. So that is why they have created the different OU. बहुत सारे रीजन है क्रिएट करने का, ये सब तो एक छोटा छोटा रीजन बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे टेक्निकल रीजन्स हैं जिसके वजह से, राइट, they are creating a different OU. Okay, is that clear? Yes, sir. Okay, now, so when we want to block a YouTube, then we use a GPU, group policy. We use group policy, we create a group policy and implement it on a OU, right? On a particular OU. Okay. Now, suppose that this YouTube block policy is implemented on a Delhi head office. राइट, इन दिल्ली यू हैव एन हेड ऑफिस, नोएडा में आपका हेड ऑफिस है, आपने इंप्लीमेंट कर दिया इन दिल्ली हेड ऑफिस, एचओ, राइट, दिल्ली एचओ हेड ऑफिस में हैव यू इंप्लीमेंटेड दैट पॉलिसी यूट्यूब। नाउ इन दिल्ली ओनली देयर इज अ सीईओ, सीएफओ, सीडीओ, राइट? These guys are VIP, right? These are the owner of the company, right? CEO है, CFO है, CDO है। CFO मतलब होता है चीफ फाइनेंस ऑफिसर, राइट? हु इज गोइंग टू फाइनेंस योर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फाइनेंस आती है, दैट इज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्रॉम हिज टेबल ओनली, यही पास करेंगे, इनके पास ही सारा रिपोर्ट आता है। चीफ डिलीवरी ऑफिसर, जो भी आपके कंपनी डिलीवरी कर रही है, जो भी क्लाइंट के पास जो भी चीज आप डिलीवर कर रहे हैं, जो भी चीजें आपका प्रोडक्ट जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी, इनके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होगा, राइट? सो यू नीड अ दिस, तो दिस 3-4 guys इज वेरी फेमस, वेरी पावरफुल, राइट? दे हैव अ पॉलिटिकल कनेक्शन ऑल्सो, राइट? नाउ दीज गाय, इनके ऊपर आप कोई पॉलिसी नहीं लगा सकते, अगर कोई लगाते भी हैं नॉर्मल पॉलिसी लगा सकते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी आप नहीं लगा सकते ब्लॉकेज का, जैसे कि यूट्यूब ब्लॉक, पेन ड्राइव ब्लॉक, राइट? ये सब इन लोगों को नहीं जमेगा, इनको चाहिए वो सब एक्सेस, राइट? पेन ड्राइव भी चाहिए इनको, यूट्यूब भी चाहिए। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट वन ग्रुप, राइट? ग्रुप इज यूज फॉर प्रोवाइड अ एक्सेप्शन, right? You can give the permission to this, so you can create one group,
राइट। अब एक एक करके एक्सक्लूड करना इज नॉट गुड आइडिया, राइट। सो यू कैन क्रिएट वन ग्रुप, राइट। यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लीजिए, ओके। एंड दिस हेड ऑफिस क्रिएट वन ग्रुप यूट्यूब एक्सक्लूजन, create the one group YouTube exclusion with the name of YouTube exclusion, right? Now, what you can do whenever anyone asks you, anyone come with a approval that I need a YouTube access, what you need to do is you just put that guy name in this group. All these CFO, CEO, CDO, put this name on this group and make this group एक्सक्लूडेड फ्रॉम द यूट्यूब पॉलिसी। जो भी आपने यूट्यूब का जीपीयू पॉलिसी लगाया है उससे इस ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना, राइट। सो exclude that GPO policy for this group. So whenever you are going to add that guy name in this group and update the group policy, that guy is able to access the YouTube. Understood? So group is used for the exclusion permission. राइट, एक्सक्लूजन के लिए भी कह सकते हैं, एंड यू कैन से एक्सक्लूजन मत बोलना, ए स्पेशल परमिशन, राइट। ग्रुप पॉलिसी इज ऑलवेज इंप्लीमेंटेड ऑन OU, एंड व्हाट यू हैव डन विद द ग्रुप्स इज यूज्ड फॉर द स्पेशल परमिशन. If you need any special kind of a permission, then create a group and give that special permission to that user. Understood? Is that clear? Yes, sir. So this is the definition. An OU is a container within the Microsoft Active Directory domain which can hold user groups and computers. Same thing. Active Directory में जो चीज होता है वो same. It is a smallest unit to which an administrator can assign a group policy setting or account permissions. Right? An organizational unit can have a multiple OU within it. OU के अंदर भी OU हो सकता है, that is called the nested OU. तो आप लोग को इतना nested OU में नहीं जाना है. Okay, now what is a groups? Groups is a assignment of permission typically on file, right? कोई फाइल पे कोई चीज असाइन करनी है, फोल्डर्स पे कोई यूजर्स को स्पेशल परमिशंस देना है, then you can do it by group. OU is management of setting, typically on PC. That's why I am still told you group policy. Group policy is always implemented on the system, right? तो group policy कहाँ पे जाता है? OU में. And groups में क्या जाता है? Assignment of a permissions. Any special permissions you want to give him, then you can give it. Okay? कोई फाइल एंड फोल्डर है, राइट, कोई फाइल एंड फोल्डर है, वो फाइल एंड फोल्डर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, राइट, एंड सम ऑफ द गाय नीड दैट फाइल एंड फोल्डर एक्सेस, तो आपको हर बार जाके परमिशंस देने की जरूरत नहीं है. यू कैन क्रिएट वन ग्रुप, राइट, एंड ऐड दैट गाय इनटू दैट ग्रुप. जैसे आप उस ग्रुप में उस बंदे को नाम रख दो, उसमें ऐड कर दोगे, that guy can get that access. Once you add that user into that group, that guy can access that files and folders because they get the special permission through the group and they are a member of that group and they are going to use it. Understood? Is it clear? Yes, sir. Sir, can you share this? What? Sir, can you in the chat? Can you share this file? You need this file, but इसमें बहुत सारी चीजें, इतनी चीजें आप लोगों को जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे. जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट. इतना चीज देंगे तो आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. लेकिन है जरूरत की चीजें, सर्विस डेस्क की चीजें ही हैं, राइट. अगर आप You लोग can share, sir. We won't get confused, sir. It will be helpful because you have got very refined notes, sir. लेट मी गिव यू, चैट से डाउनलोड कर पाओगे आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, In downloading, sir, all are expert here. चैट से क्योंकि परमिशंस नहीं होगी डाउनलोड की, राइट. आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन द पोर्टल, चेक इट ऑन अ पोर्टल, राइट.
Sir, we can download, sir. Other notes also we downloaded. That's why, sir. Active Directory is a directory. It can't be sent because it is currently in use. Close the file and try again. Okay. Oh, sorry. Microsoft SharePoint. I don't want file from your computer. From notes on portal we can download, sir. Mhm. That only we can see. That's why, sir. ओके, अपडेटेड। वैसे परमिशन नहीं है शेयर करने का, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो आई हैव शेयर्ड इट। ठीक है, चलिए। ओके, अंडरस्टूड। There is some FSM rule also. If you understood, then read it. Otherwise, exclude that FSM. FSM रूल भी पूछता है सर्विस डेस्क इंजीनियर से। सर्विस डेस्क इंजीनियर के पास मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। If you want to be a senior service desk engineer, then you should know each and everything about the server policy, group policy, because access for any access, they are not going to reach to the server team. They are first come to you, right? The first point of contact in organization is for any IT related problem, that is IT help desk. And IT help desk, IT service desk is the first point of contact. Anyone can reach to you, right? They are going to means anyone reach to you, you have to help them, right? So you have to make all picture clear. Suppose this is the issue, then where I need to reach, right? Whom I need to reach, right? ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जब आप एक सर्विस डेस्क इंजीनियर बनोगे, जब आप उस पोजीशन पे बैठोगे, तो यू शुड नो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज नॉट हैंडल्ड बाय अस, right? This for this problem we have a separate team. So who is the owner of that team, who is available on that team right now? So ऐसे इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, and you can send that ticket, you can transfer that ticket directly to that person or directly to that group. Okay, so कभी भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ये सब चीजों का, तो आप सर्विस डेस्क पे बैठ के टाइम बर्बाद करोगे, और दैट और कुछ नहीं, राइट? और टाइम बर्बाद करोगे। सपोज किसी ने सर्वर का प्रॉब्लम लेके आया, एंड यू डोंट नो द सर्वर ग्रुप वेयर वी नीड टू ट्रांसफर दैट टिकट, एंड यू डोंट हैव अ डीएल ऑफ द सर्वर। तो आप आधा घंटा क्या करोगे, उसको उसका नाम पता करने में बर्बाद कर दोगे, और उसको मेल करने में बर्बाद कर दोगे, राइट? सो हाफ एन आवर इज वेरी क्रूशियल इफ देयर इज समथिंग P2 ticket come you, right, in front of you, P2 ticket, and that is related to the VPN, right? And you don't know which team I need to transfer this VPN ticket, right? You know it is a network team, but you don't know the network group name, right? तो भी दिक्कत है। तो आपके डेस्क पे जब भी आप सर्विस डेस्क के टीम मेंबर बनोगे, तो आपके डेस्क पे बहुत सारे लिस्ट रहेंगे, एंड यू यू हैव टू अटैच दैट लिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर सीट, राइट? अपने डेस्क पे लगा लेना वो सब, वीआईपी यूजर्स के नाम लगा लेना, राइट? जितने भी ग्रुप्स है उनका नाम लगा देना, जितने भी डीएल्स हैं लगा देना, इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लगा देना, मतलब हर एक ग्रुप के मैनेजर्स को लगा देना जो कि आपके टीम के हो, आईटी इंफ्रा टीम के जो भी है। फायरवॉल कौन देखता है, डाटाबेस कौन देखता है, राइट? लाइक दिस। तो व्हाट हैपेंड, उससे क्या होगा कि यू विल हैव अ
clear picture and you can easily work on. आपको जल्दी से काम करने में फायदा होगा और आपका टिकट कभी भी ब्रीच नहीं करेगा. You have to Sir, sir, you have shared file only with me. You can share to everyone. Maybe people have not received the file. Okay. Wait. That notes, yes, sir. और Sir, किसी ने can you बताया भी share नहीं, किसी ने all? बताया भी नहीं. ये देखो, ये that is the very But funny. sir, I mentioned so that everyone. No worry, brother. I reminded, sir. बताना तो चाहिए ना कि सर नहीं मिला हमें, राइट. बाकी लोग अच्छा ठीक. Actually, sir, it happens, when we are talking with the senior, na, we are like, we are waiting for that pause or moment, but that's why. ओके, रिसीव्ड एवरीवन. हाँ, चलो चलो. तो Yes, अब sir. ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का उसमें से पढ़ लेना. अब देखो, उसमें और भी बहुत सारी चीज है जो मुझे बताना है, राइट. अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दो तीन पॉइंट और है. जीपीओ बता दिया, ओयू बता दिया, राइट. नाउ कम टू द हियर, tree and a domain. What is a tree and what is a domain, right? What is a child domain and what is a tree? Hmm? Let's see this diagram. Okay, let's see this diagram. Here you can see a red.com is one organization. Here you can see blue.com is another organization. So both the organization got merged, and this is both the organization is connected through the domain level trust, right? So this is called the forest. फॉरेस्ट का मतलब होता है डोमेन में बहुत सारे डोमेन है. देखो, दिस इज द पेरेंट डोमेन red.com and this is the child domain. Account.com is the account.red.com is the child domain. Engineer.red.com is a child domain. Red.com is the parent domain. So parent domain and these two are the child domain. Okay, so combination of these three is called a tree, right? This is called the tree, and the combination of a tree is called the forest. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ फॉरेस्ट एंड व्हाट इज अ ट्री, सो ट्री इज अ इनसाइड वन डोमेन. एक डोमेन के अम्ब्रेला के नीचे जितने भी डोमेन क्रिएटेड रहेंगे, दैट कम्स अंडर अ ट्री. इन एफ दो टू ट्री merge more than one tree is going to be combined, then it is called a forest. The example that we can see here. So, like I have seen one of the state government website. Earlier, they had different departments, means for No, different purposes. Now they department combined. department So, नहीं, department नहीं, department. means It is just like a domain, means you are separating the organization wise, right? जैसे कि Reliance Group है, right? yes, Reliance Group have the multiple business, right? So they have separated all the business differently. फाइनेंस का अलग होगा, ओके, मेडिकल का अलग होगा, ओके, राइट. कंस्ट्रक्शन का अलग होगा. जैसे लाइक जैसे कि टाटा, राइट. टाटा हैव अ सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मोटर्स. लेकिन अगर वो सब चाहते हैं कि सबको मैं एक फॉरेस्ट के अंदर रखूं, तो दे कैन, राइट. तो ऐसे होता है, लेकिन बेसिकली इंडिया में ये सब इतना नहीं होता. आई थिंक जब दो कंपनी मर्ज करते हैं, देन दे आर गोइंग टू क्रिएट अ फॉरेस्ट. जैसे कि दो कंपनी मर्ज हुआ, जैसे एलटी एंड टाटा, अभी माइंड ट्री मर्ज हुआ प्रीवियसली ईयर, दे बोथ द कंपनी गेट मर्ज्ड, राइट, मर्ज हो गया. तब जो एलटी का है वो ये ट्री मान लो एलटी का है और ये माइंड ट्री का है, राइट. So they are going to establish the forest level trust and they are going to join that, so that here those employee is from a mind tree. जैसे पुराना एम्प्लॉय है कोई माइंड ट्री का और कोई पुराना एम्प्लॉय है एलटी का, राइट. तो अब उनको कोई एक्सेस करना है इधर का सर्वर, राइट.
So they need permissions, right? They need access so that this Active Directory can trust him कि हाँ ये बंदा अपना ही बंदा है, right? इसको एक्सेस देना है, तो ये ऐसा फॉरेस्ट लेवल ट्रस्ट इस्टेब्लिश करना पड़ता है. Is that clear? Yes, sir. अब डोमेन कंट्रोलर एंड एक्टिव डायरेक्टरी बता दिया, नोट्स आप लोगों को दे भी दिया, ठीक है. ट्री एंड डोमेन एंड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. अब एक और चीज होती है, राइट, यहाँ पे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक ही नाम के दो डोमेन क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट. देयर इज एन 5 रूल, वी कॉल्ड इट एज FSMO. उसमें से एक रूल है डोमेन नेमिंग मास्टर का रूल. दिस इज द डोमेन नेमिंग मास्टर. With this domain naming master, with this rule tell us that in one forest there is only one domain with the same name. Means single name होना चाहिए. If there is a duplicacy in the name of a domain, तो domain name master is giving an error. वो error दे देगा आपको, दूसरा domain create करने नहीं देगा. ओके, तो ये जो डोमेन नेमिंग मास्टर्स हैं, ये जो रूल सेट किया है, दैट इज द रूल जिसके वजह से आप दूसरा डोमेन नहीं क्रिएट कर सकते हैं सेम नेम का. ओके, जो आप लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी का रूल पढ़ा कि जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी में डाटा वगैरह स्टोर होता है, वो किस रूल के तहत स्टोर होता है? व्हाट इज द रूल, राइट? सो बाय यूजिंग दैट रूल, एक्टिव डायरेक्टरी इज storing all the information, that is called the schema master. A schema master is a role, right, that is stored all the attributes like employee ID, phone number, email address, login name. So this rule is called the schema master rule, right? Not rule, role, right? Here you have another PDC emulator role, right? PDC emulator role is to authorization and authentication, right? So this role is implemented on the domain controller. This schema master role is implemented on the Active Directory, right? तो यही कुछ 5 रूल है. ये इसमें से ये 2-3 रूल आपको पता होना चाहिए. बाकी तो ये यूजर क्रिएशन का है, मूवमेंट का है, तो उतना डिटेल में नहीं भी पता होगा तो चलेगा. बट यू शुड नो द स्कीमा मास्टर एंड द पीडीसी एमुलेटर. ओके, पीडीसी एमुलेटर पढ़ लेना, स्कीमा मास्टर पढ़ लेना एवरीवन. So what it does PDC emulator, sir? PDC, there is a 5 role. When you established a server, there is a 5 role, right? Flexible single master operation role. So there is a 5 operation role. One of them is a PDC emulator, right? PDC emulator role is the rule set by the domain controller, right? Domain controller का जो role होता है, authorization and authentication, that role is due to the PDC emulator. पीडीसी एमुलेटर के अंदर जैसे संविधान बनता है किसी भी गवर्नमेंट का, तो संविधान में आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब होता है कि ये बंदा, इस लेवल के बंदे का ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, इस बंदे के लेवल के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा. जैसे कि संविधान में अगर प्रधानमंत्री का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन है, तो वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका फिक्स है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई चेंज नहीं कर सकता है. Okay, so similarly here is a 5 roles in the when you create any ADDS server, then there is a 5 role which is automatically stored in your server, right? So within that role you have a different servers which is going to perform their actions, right? So PDC emulator is a one role which is fully implemented on the domain controller server. Domain controller is going to be work under this rule. Now is it clear? Yes, sir. Active Directory is worked on this schema masters role. Okay, domain naming master, you
you don't have a permission to create a duplicate domain, right? सेम नाम का दो डोमेन नहीं क्रिएट कर सकते, because domain naming master is not going to allow you. अच्छा Okay. You सर can there you can create a multiple OU inside a one domain, multiple group inside a one domain, group inside a group, you can create it. Okay, group in OU, in that OU you can create a group, you can create a user, you can create a, क्या कहते हैं उसको, कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बना लो, कंप्यूटर्स में, उसमें कंप्यूटर्स के अंदर नाम डाल दो. Inside OU also you can create a another OU, that is called the nested OU. OU के अंदर OU, OU के अंदर OU, that is called the nested OU. Let me show you how it's look like. देखो, पहले एक्टिव डायरेक्टरी का इमेज देखो. See, this is the active directory, right? So suppose you want to reset the password, you can go and reset the password. So this is the active directory users and computer. Okay. So here is the na groups, right? देखो CEO का बनाया हुआ है, या ये ग्रुप्स हो सकता है, या ये OU है, you can say test OU, right? So ऐसे आप OU क्रिएट कर सकते हैं, OU के अंदर OU क्रिएट कर सकते हैं. So this is the active directory, right? Let me show you the proper OU, active directory, OU in active directory. See here, open in a new tab. See here. Here you can see in USA, there is a UK, one OU. Another OU is USA. In USA, inside that USA, you have another OU, California, Florida, Nevada, Texas, right? तो ये चार शहर की अलग अलग OU बना लिया है. ओके, अंडरस्टूड. अब ये देखो, ये इस OU के अंदर देयर इज ना एडमिन, कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स, ग्रुप, server, services, and users. Understood? You can yes create a group, you can create a OU, right? Here you can see, whenever you are going to create any user, do you know how to create a user in Active Directory? आप लोगों को बताया गया है, यूजर क्रिएशन किया है आप लोगों ने. See here, this is the abc.com. See here, abc.com, right? This is an Active Directory. Visible है? yes sir See, this is an Active Directory, right? And in Active Directory, you have an abc.com. abc.com is an organization जिसका domain है, right? Now you want to create a new organization unit, right? Here you can go right click on that domain, go on a new and click on the organizational unit. Organizational unit जैसे click करोगे, you will get one folder over here. Put the name of that फोल्डर. जैसे फोल्डर का नाम डालोगे तो जो भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का प्रॉपर्टी होगा उस फोल्डर पे ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा. ओके, एंड when you want to create a user, you have to go to the particular OU and then right click and create a user, right? Let me show you that part also. मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी तो है नहीं, मैं सोच रहा हूँ इंस्टॉल ही कर लूँ. yes sir बट दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, राइट? 2-3 दिन लगेंगे मुझे करने के लिए, क्योंकि मेरे को, आई एम नॉट फ्री ऑल टाइम, राइट? आई हैव एन ऑफिस आल्सो. आई हैव टू जॉइन ऑफिस okay आल्सो, sir राइट?
So in Saturday, Sunday, I want to set up my server environment also. 3-4 Sir, सर्वर पड़ेगा मुझे. sir, sir, like if there is a new joiner, we get the email ID and password Mm-hmm. default. So that would be done by like service desk people. No, Means no. manager would be creating a Service desk people can also create a username and password, but it is done by the HR or a server team. HR send a request to the server team, and server team create that user ID and password. Because service desk engineer don't have that much of knowledge what type of permissions they are going to give the newer guy. अब service desk engineer ने create किया user ID and give the new guy as a administrator power, right? For an example. Hmm. So that responsibility is given to the some responsible person, right? Active Directory में सब किसी को हर किसी को नहीं देता है वो permission create करने का, because if you are going to give the fresher guy to do these things, they can do the mistake, and अगर एक mistake हो गया ना तो कंपनी बंद हो जाएगी, राइट. अगर आपने कोई नए बंदे को आपने एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन दे दिया या कोई सर्वर का एक्सेस दे दिया और उस बंदे ने सारा डाटा कॉपी किया उस दिन और अगले दिन से गायब, ऑर्गेनाइजेशन में आया ही नहीं, राइट. नेक्स्ट डे उसने लीव मार ली और आया ही नहीं, अब कौन हो गया और वो डाटा उसने अपने आपके कंपटीटर को बेच दिया, योर कंपनी विल बी इन ह्यूज लॉस. तो जो भी चीज दिया जाता है रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स को दिया जाता है ये सब चीज करने को, ठीक है. आपको जल्दी से नहीं मिलेगा ये सब चीज, बट लर्न इट, राइट. पता होना चाहिए कैसे क्रिएट करना है. जब मिलेगा तो उस दिन ये नहीं कहना कि मुझे आता नहीं है, राइट. यू शुड नो. right, sir. So, sir, from the topic of Windows administration, high chances are there that they would be putting questions on these two topics: group policy, नहीं, work ये group, सब domain क्वेश्चन control. ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं पूछेगा. ग्रुप पॉलिसी वगैरह लिटिल बिट दे आर गोइंग टू आस्क यू 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन. एक्टिव डायरेक्टरी दे आर गोइंग टू आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन. SLA, domain controller, they are going to ask you multiple questions, right. This do not come under the window administration, right. This is for the window administration से आपको server troubleshooting, operating system troubleshooting, that questions you will get. ये सब questions जब आप when you are going to apply for the service desk engineer, then you will get this type of multiple questions, right. Otherwise डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर को इतना डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछेगा ग्रुप पॉलिसी वगैरह के बारे में, राइट. फिर भी पूछ सकता है बिकॉज ही हैज राइट टू एवरीवेयर, राइट. हर जगह पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का भी राइट होता है, लेकिन ये जो DL क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, यूजर के परमिशंस वगैरह, दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड मोस्टली टू द सर्विस डेस्क इंजीनियर, ओके. और नेटवर्क इंजीनियर से भी ये सब चीजें पूछ सकता है, okay. So here you can see this is the image, right. Open into a new tab. See here. See here, this is the ad.wind winadpro.com, right. winadpro.com जो भी है, ठीक है. So inside there, here this is a one OU, right. इन्होंने OU नहीं बनाया है, ये डायरेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. Here there is a one कोई भी OU ही है, I think, right. It is not visible properly. It is, I think, OU. Right click on the OU, go to the new, and here you can create a users, right. Right click and create a user. When you click on the users, you will get this image, right. This, right. Here you can put the first name, initial, Mr., Doctor, whatever you want to put it. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, लॉगन नेम, किस आईडी से लॉगिन करेगा, राइट. जैसे कि टेस्ट यूजर 1, जैसे अब विनय है, अब 2 विनय है ऑर्गेनाइजेशन में, तो विनय 1, विनय 2 @ ऑर्गेनाइजेशन का आईडी आ जाएगा, राइट.
कंप्यूटर में लॉगिन कैसे होता है, पहले डोमेन डाला जाता है, देन स्लैश एंड देन विनय1, right? So this is the way you can log in into the computer, click next and finish. User creation हो गया. Now take this user, in which group you want to add this user. अगर ये मैनेजर्स है तो एड इट इनटू द मैनेजर ग्रुप, अगर मैनेजर का ग्रुप है आपके पास तो मैनेजर के ग्रुप में ऐड कर दो। सर्विस डेस्क के बंदा है तो सर्विस डेस्क ग्रुप पे बनाया है आपने तो सर्विस डेस्क में ऐड कर दो, राइट? जो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसके, इसका मैनेजर का नाम ऐड कर दो, किस मैनेजर के अंदर ये आता है, राइट? ऑल द डिटेल यू नीड टू फिल इट हियर, यू कैन सी। यहाँ पे ये ओपन करो, हियर इज द ऑल द प्रॉपर्टीज, राइट? गो टू द मेंबर ऑफ में क्लिक करो, किस किस का ये मेंबर है देखो, right? You will see the list of the member for which this guy is, and if you miss someone, go to the Active Directory, add that guy into that member, that group, okay? Security check karo, environment check karo, to whom he is reporting, check that, right? Edit his manager name. If the manager name is different, right, edit him. Who is the original manager, put their original manager name, right? Each and everything you have to do it from the Active Directory. Here you can see, put the telephone number here, email ID. If this guy have some web page, right, put their web page name. मतलब होता है ना कोई कि मर्ज किया है बिजनेस को, उसने अपना भी बिजनेस लाके कंपनी के साथ मर्ज किया है, राइट? तो वो उसका वेब पेज डाल के उसको दे सकते हो आप कि आपका वेब पेज का डिटेल है इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में, तो कोई भी बंदा आपका वेब पेज का इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है, ओके? So these are the Yes. things you can go to do in the Active Directory. Active Directory में बहुत सारी चीजें है, बट आप लोग को कितना भी पढ़ा दूंगा कंफ्यूजन हो जाएगी, काम करते करते आप लोग सीख जाओगे ये सब चीजें। दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, एक साल में विद इन द ईयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द बिगिनिंग स्टेज, राइट? दिस इज द एंट्री लेवल पोजीशन, यू हैव टू एंटर इनटू द आईटी इंडस्ट्री। उसके बाद आपको आईटी इंडस्ट्री का चारों तरफ का रास्ता खुल जाएगा, जिधर जाना है यू कैन गो, ओके? Yes, sir. Yesterday, sir, in personality development class, we got to know about gratitude. That we get gratitude after 5 years. So, sir, my query is like I need a guidance from your end. Like in today's time, I don't see anyone staying for 5 years in a particular company. Means people could be staying, but still. So, what is your suggestion on this? Like we should run after getting a gratitude. Like okay, let's be working in the same company for 5 years. Sir, what is your take on this? Like what should we do in this scenario? अभी ये दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, राइट? मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, Yes, sir. इट इज नॉट बाय द ऑर्गेनाइजेशन और राइट। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको कंपनी में काम करने में मजा आ रहा है एंड इफ यू सी देयर इज योर ग्रोथ, देन स्टिक देयर, नो नीड टू चेंज इट। लेकिन अगर आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है और आपका वहां पे करियर ग्रोथ नहीं है, देन वर्क 1 year, get an experience and switch to the next organization। जहाँ पे आपको अपना कैरियर ग्रोथ दिख रहा है, आपको अपना डेवलपमेंट दिख रहा है, गो एंड ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कोई किसी का वो नहीं रखा है कि हम 5 साल उसको काम करके दे और वो हमें गधे की तरह काम कराए और रिटर्न में हमें कुछ भी ना मिले। 30,000 पे ज्वाइन किया, 5 साल बाद हमारा मेरी सैलरी 50,000 है, तो दैट इज नॉट एनी ग्रो, राइट? कुछ भी नहीं Yes, किया sir. 5 साल में, ठीक है? और मैंने कोई नई टेक्नोलॉजी भी नहीं सीखी। हाँ, कई जगह पे क्या होता है, you have a less pay but you learn lot of things, right? तो इतना ज्यादा पे के हिसाब से अगर उतना ज्यादा चीज आप सीख भी लेते हो, तो जब आप कहीं पे जंप भी करते हो तो कंपनी आपको, बहुत सारी कंपनी है, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन 100% हाइक, मोर देन Right, 200 sir. हाइक, राइट? तो आप अगर 5 साल वहां पे काम करके बहुत सारी चीज सीख भी लेते हो और 5 साल में आपकी 50,000 रुपये सैलरी हुई है, तो अब जब जंप करोगे तो आपकी 1 लाख सैलरी होगी और वहीं पे दूसरा आपका फ्रेंड जो कि 2 लाख 2.5 लाख पे खेल रहा होगा। तो बेटर है कि इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू कैन जंप इट।
Okay, If you right, sir. get the proper company, Hike. राइट, प्रॉपर हाइक एंड सिर्फ पैसे के लिए ना मत भागना, राइट। जैसे कि अब पैसे दे रहा हूँ और वहां पे चले गए और काम टेक्निकल नहीं है, देयर इज ए नॉन टेक्निकल वर्क, राइट। तो फिर दैट विल, अब जब दूसरा जंप मारोगे आप तो वहां पे आपको सैलरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यू डोंट लर्न द एनी टेक्नोलॉजी, राइट। तो ऐसे भी नहीं करना है, यू हैव टू लर्न द टेक्नोलॉजी अलोंग विद द, आपको पैसे भी चाहिए, बिकॉज बिना पैसे की, देखो ये सब किताबों में अच्छी लगती है कि सिद्धांत अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए, वो होना चाहिए, दैट इज राइट, सब चीज ठीक है। लेकिन जीने के लिए इतने पैसे भी होने चाहिए जिससे कि आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड और अपनी लाइफ को मेंटेन करो। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागो, बट एटलीस्ट यू शुड, मार्केट में जो चल रहा है उतना तो मिलना चाहिए, It's a, right? so here I need a second guidance. Like after 6 months of experience as a technical support, suppose I am 6 मंथ getting a में good जॉब मत opportunity. चेंज करो, 6 मंथ में जॉब मत चेंज करो, 6 मंथ में तभी जॉब चेंज करो, ओनली चेंज योर जॉब विद इन द 6 मंथ व्हेन यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू डोंट गेट एनीथिंग, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ नहीं टिक पाऊंगा मैं, देन Yes, ओनली, sir. राइट। Sir, बट एट लीस्ट anywhere if you get a job, do work at least 1 year or more than 1 year, at least, right? That is my opinion, because when you get a 1 year of experience, then you will get a huge hike. Because what happened, let me give you one example. What happened, जब आपका ग्राफ बढ़ता है सैलरी का, व्हेन योर सैलरी ग्राफ इज गोइंग टू बी इंक्रीज, सो एट द बिगिनिंग यू आर एट अ 3 LPA, मान फॉर एन एग्जांपल 3 LPA, 4 LPA, राइट। सो from here you can get it 7 LPA, right? If you work it for a 1 year, 7 LPA, 8 LPA भी जा सकते हैं, right? बट यहाँ से 8 के बाद सैलरी बढ़ना थोड़ा इतना जल्दी हैक हाइक नहीं मिलता है, ठीक है। अब 8 के बाद अगर वो 100% हाइक दिया तो यू कैन इमेजिन 16 लाख हो जाता है, तो उतना हाइक नहीं देता है वो। लेकिन 3 का अगर आप उसे डबल मांगोगे, 6, ओके 6 चल रहा है मार्केट में, वो दे देगा, 7 मांगोगे दे देगा। तो अगर, लेकिन अगर आपने 6 महीने पे चेंज किया, राइट, 6 महीने पे जॉब चेंज किया, तो कोई भी आपको 7 लाख या 6 लाख का हाइक नहीं देगा। विद इन द 6 मंथ दे आर गोइंग टू गिव यू मोर, मैक्सिमम 1 लाख हाइक, 4 LPA या 4.5 LPA पे जॉब करो, ठीक है। फिर आप 4.5 पे जॉब करोगे, राइट, 4.5 से फिर जब आप जंप करोगे, फिर आप जल्दी जल्दी जंप करोगे 4.5 पे, ठीक है, तो आपको 6 मिलेगा। लेकिन they are going to ask you why frequently you are changing the organization, right? फिर जब यहां से जब तीसरे पे जंप करोगे, तब आपको डिफिकल्टी स्टार्ट होना शुरू हो गया, बिकॉज योर प्रोफाइल, इन योर प्रोफाइल इट इज showing that you are changing organization every year, right? So जब एवरी ईयर जैसे चेंज होने लगेगा, तो एक टाइम पे जाके हर कोई ये परसेप्शन बना लेता है कि ये बंदा तो टिकेगा ही नहीं, अगले साल फिर ये भाग जाना है, ठीक है। तो यू विल नॉट गेट अ गुड सैलरी, और आपको उतना अच्छा प्रोफाइल की जॉब भी नहीं मिलेगी। सो स्टिक, ये भी ध्यान में रखना है कि आपको जब सैलरी मिले, जब टेक्नोलॉजी मिले, क्या टेक्नोलॉजी आपने सीखा है, राइट, और फिर उसके अकॉर्डिंगली ग्रो करना है, उसके अकॉर्डिंगली जॉब चेंज करना है। ऐसा नहीं कि मुझे अभी मैंने, बहुत सारी कंपनी आपको कॉल करेगी, देखो ये भी मैं बता देता हूँ, फैक्ट है ये, राइट। आप जैसे कंपनी में ज्वाइन करोगे, ठीक है, 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी कंपनी से कॉल आएगी, ठीक है, हमारे पास ज्वाइन कर लीजिए, आई विल गिव यू दिस मच ऑफ सैलरी, हाँ मुझे कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाइए, राइट। वो ऐसे भी बोलेंगे आपको, 3 महीने 4 महीने के बाद आप ऐसे जगह स्विच करते हो, तो दैट विल बी लॉसेस फॉर यू, राइट। क्या होगा, वहां पे आप जॉब जंप कर लोगे, वहां चले जाओगे, राइट। वहां पे जाने के बाद सपोज यू आर वर्किंग ऑन एक्स कंपनी,
right? Suppose this is an X company, you are working on a X company, you got a call from a Y company, right? Y company, and within the 3 month you get a call, or a 4 month you get a call, or a 6 month you get a call. Okay, you get a call, and you are frustrated in this X company. For an example, you are frustrated in the X company, so you want anyhow I can leave this organization and get a new job. So Y company get understand that things, right? आपके इंटरव्यू में, आपके बातचीतों में अंडरस्टैंड कर लेगा। तो वाई कंपनी आपको क्या बोलेगा कि ठीक है आप आ जाइए, नोटिस पीरियड सर्व करने की जरूरत नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एनीथिंग, जस्ट शेयर मी विद द सैलरी स्लिप एंड योर ऑफर लेटर एंड रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर तो देगा नहीं, एब्सकॉन्ड करोगे तो, बट दे आर गोइंग टू आस्क यू जस्ट गिव मी अ मेल कंफर्मेशन कि यू हैव गिवन द रेजिग्नेशन। इतना मांग के आप ये वाई कंपनी में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो दो चीज हो सकती है यहाँ पे, इफ वाई कंपनी इज वेरी गुड then it will help you. If Y company is also the similar to the X organization, then what will you do? Your 6 month experience is gone. आपने वहां पे कुछ भी नहीं किया, 6 महीने काम किया, नो एक्सपीरियंस लेटर, नथिंग, यू हैव एब्सकॉन्डेड। अब ये जो 6 महीने का एक्सपीरियंस है ये तो बर्बाद हो गया। 3-4 महीने में आप यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेट हो गए, सैलरी भी ज्यादा नहीं बढ़ा, राइट? अब यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेट हो गए। अब जब आप चाहोगे कि मैं नेक्स्ट कंपनी में जॉब करूं, देन आपको जॉब मिलने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन होगा, दे आर गोइंग टू रिजेक्ट यू। सो डोंट क्रिएट दैट टाइप ऑफ थिंग। जहां पे भी काम करोगे, फर्स्ट जॉब है आप लोगों का इस फील्ड में, आईटी फील्ड में, आई डोंट नो आप लोग बाहर काम कर रहे होंगे किसी फील्ड में, राइट? रिलीवेंट एक्सपीरियंस के नाम पे वेन एवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, चाहे खराब हो, कुछ भी हो, अगर आपको नहीं जम रहा है, 6 मंथ के बाद नहीं जम रहा है, देन give a resignation, serve a notice period, take a experience letter, then only change the organization. Understood? बीच में छोड़ के नहीं भागना, बिकॉज इट विल, अगर आपको लगेगा कि चलो यार 3 मिल रहा है यहाँ पे, वहां पे 4.5 मिल रहा है, बहुत अच्छा है, जंप कर लेते हैं, राइट? जंप कर लोगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब भी Sir, जंप करना, एक्सपीरियंस लेटर के साथ जंप करना। एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू हैव लर्न एवरीथिंग, राइट? If you learn everything, being as a service desk, if you learn everything, then create your relation, right, with the another team member, like a network team, server team, right? And start learning to from them, right? Start learning server, start learning networking, right? So that once you completed a 1 year, apart from the service desk, you have a knowledge of the server plus network, so that when you jump to the next organization, you can show you have an experience of a service desk also and a server also. So you have an opportunity, you can join as a system admin also, senior service desk engineer also, right? As a network engineer also. Understood? Is it clear? समझ में आया बात? तो ये चीजों को ध्यान में रखना है जब भी आपको ये सब चीजों को करना sir, है। sir, like suppose after 6 months of experience, and not just because of the salary thing, but because I'm getting a specific role, cloud role that I'm kind of looking for, and because of that, I want to switch after 6 months of experience. Then If in you that change the scenario, there would be a technology, guys, yes, let sir. me That, if you so change the then technology, then you can change. You can yes, change it sir. So I'm because just there is an explanation, right? You can tell them, I know a technology, I learn a cloud, and then I want to work on a cloud. yes, That's why I change that organization and go for the new technology, yes. right? I can say why to wait for 6 more months just to complete 1 year thing because I'm getting a Hmm. opportunity in the salary or in that particular domain. Hmm. Cloud domain, that's why I'm switching, but at the same time there would be a kind of
silent compulsion to complete at least 1 year, because I'm switching after 6 months. It means I have to stay for at least 1 year in the second company so that I can sound good on CV while switching for the third company, right, sir? Yeah, you can. That doesn't matter if you are going to switching with the 6 month from the first company, and in second company you are again switching in a 6 month. That doesn't matter, right? वो इतना matter नहीं करता है. If you are changing the technology, right? If you are getting a Okay, promotion, then doesn't matter, right? But you are joining the same level, same technology within a three organization, doing the same thing in the three organization, and you are changing with a one year, then there is a no growth. Suppose in a 6 month you have done a AWS, right? yes, sir. AWS, you have joined the AWS. Yeah, Azure, you have joined a Azure as a Azure administrator, right? Right, sir. After 6 months, you get a promotion of for a solution architect. Then why you are not going to do that? Go and join it, because being solution architect आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको 8 साल 7 साल लगता है. और अगर आपको 6 महीने या साल भर में मिल रहा है, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे. और वो एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वो आपको देख के कहेगा, यार यू आर वेरी ब्राइट कैंडिडेट. 6 महीने में आपने एसोसिएट ज्वाइन किया, एसोसिएट से आपने सीनियर वो एज्यूर एडमिन बन गया, और 6 महीने के बाद आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. इन द 1 year यू आर अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. वेरी गुड. तो वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि भाई ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, राइट? लेकिन Hmm. अगर आप सर्विस डेस्क में ही हो, फिर सर्विस डेस्क में ही हो, फिर सर्विस डेस्क में ही हो, फिर सर्विस डेस्क में ही हो, तो फिर क्या, कोई नहीं हायर करेगा फिर बाद में. यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ. Okay, sir. Right, sir. चलो, ये सब डिस्कशन कल सैटरडे है, ज्यादा करेंगे. लेट्स डू सम टेक्निकल थिंग. एक और टेक्निकल चीजें बता देता हूँ. वर्क ग्रुप डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी इज कंप्लीटेड. ठीक है. ओके, राइट. कल हम लोग क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ. देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड द क्लास. Tomorrow we are going to discuss some network question. Network. So, network question. Tomorrow we are going to see some network question. Some Windows troubleshooting questions. I am giving you the questions right now. You have to prepare these questions and come back by tomorrow. Okay. And I am going to ask you questions from that notes only, right? उसी से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप लोगों को पता होना चाहिए वो सारे. तो आज आपके पास टाइम है. प्रिपेयर दैट क्वेश्चंस. ओके. Documents 80. Right. Take a screenshot. This is the question paper. Take a screenshot and prepare each and every questions. Right. इसमें से क्वेश्चंस प्रिपेयर करो. राइट. बहुत सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में. टेक दिस क्वेश्चन. डन. तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. और इसी में कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर लो. हाउ टू रिजॉल्व बीएसओडी एरर. बीएसओडी, राइट. सिस्टम स्लोनेस. System slowness, right. Black screen error, right. Black screen error, So right. BSOD and black screen are same, sir. Right, sir? No, both are different. Okay.
BSOD is different, slowness, system slowness it is different, black screen error is different. Black screen में बहुत टाइप के एरर आता है, राइट, दैट इज आल्सो डिपेंड, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट इज बोथ आर क्रिएटेड ड्यू टू द हार्डवेयर ओनली, बट देयर इज अ डिफरेंट, राइट, if they are going to ask you in an interview, you have to Color wise also different, so that is blue. no, no, don't go for the color wise, राइट, कलर तो विंडो है इसीलिए ब्लू है, राइट, जब विंडो लोड नहीं होता है तब ब्लैक स्क्रीन आता है, ओके, सो दैट इज द डिफरेंट। और नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो मैंने अभी क्वेश्चंस दिए उसमें बहुत सारे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस है, प्रिपेयर्ड इट, ओके। BSOD सिस्टम स्लोनेस, ब्लैक स्क्रीन एरर कर लेना, और आउटलुक आप लोगों को करा दिया गया है, राइट, तो आउटलुक में कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। विंडो एडमिनिस्ट्रेशन भी करा दिया गया है, मुझे जहां तक बोला गया था, राइट, बट बोला गया था कि BSOD सिस्टम स्लोनेस, ब्लैक स्क्रीन एरर आप लोगों का पेंडिंग था, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुमारो, ओके। और नेटवर्किंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कुछ कमांड्स देखेंगे, राइट, सो प्रिपेयर दैट, रिवाइज योर नोट्स एंड देन कम टुमारो, बिकॉज दिस Yes, इज sir. योर, आफ्टर दिस क्लास maybe you will get your resume, right, and then within the week maybe you will get an interview call on, ओके। तो रिज्यूमे मिलने के बाद आप लोगों का अगर कोई और कोर्स वगैरह होगा पेंडिंग तो वो हो जाएगा, उसके बाद आपका रिज्यूमे आ जाएगा, आपको जिनका हो गया है उनको रिज्यूमे मिल जाएगी, और आप लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। प्लेसमेंट टीम से कॉल आना शुरू हो जाएगी, प्लेसमेंट टीम जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, जो भी चीजें आप लोग मांगेंगे, प्लीज प्रोवाइड देम, वट एवर द थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क यू, प्लीज प्रोवाइड देम एंड keep in a touch with that placement team, okay. So Right, sir. placement team is only going to share that CV or CV, create a CV and then share with their partners, right, बिजनेस पार्टनर्स जो भी हैं उनके, उसके थ्रू वो शेयर करेंगे, और फिर उनसे आपको कॉल आना शुरू होगा, राइट, वो लोग शायद naukri.com पे भी आप लोग का प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ओके। सो and if you have any friend circles, right, and you want to share your resume with them, then that is also fine, you can share their resume to your friend so that you can get a job। इविजन में ऐसा कुछ नहीं है कि इविजन से ही जॉब लेना है, राइट, यू कैन गेट अ जॉब आउटसाइड फ्रॉम इविजन ऑल्सो, अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको करना है, तो यू कैन गो एंड ऑप्ट अ जॉब, राइट। रिज्यूमे ले लेना, मांग लेना, प्लेसमेंट टीम का जो भी प्रोसीजर है वो प्लेसमेंट टीम आपको समझा देगी, मुझे नहीं पता ज्यादा डिटेल में, राइट। तो बट आप लोगों को बोलना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने 10 कैंडिडेट इज इन दिस क्लास, I am always seeing only Vinay is speaking, right? Rest of the guy is just listener. Okay. कभी कभी और दो तीन हैं, they are Hima is going to ask me some doubt, right? Hima हो गया, right? बाकी और मैंने किसी से कुछ भी नहीं सुना अभी तक। I haven't received any doubt, any question from you guys, right? इक्का दुक्का पूछा होगा आप लोगों ने, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट, यू हैव टू स्पीक अप, right, because when an interview, if you are going to be introvert in an interview, then this will be very problematic। इंटरव्यू में जितना क्वेश्चन पूछा उतना ही बताया, हाँ ठीक है 15,000 देंगे हम आपको, आ जाना कल से, राइट, आप एक वीक के बाद आपकी ज्वाइनिंग है, 15,000, राइट, तो क्या फायदा, 15,000 में कुछ होगा, नहीं होगा, सिलेक्शन हो गया, सैलरी 15,000 ही है, राइट, तो दैट इज नॉट अ गुड, राइट। सो स्पीक अप, जैसे ही बोलेगा 15,000, नो सर, 15,000 is very less, it is not suit my talent, right, what is the job role you have offering me, in a market its value is at least 30,000, right, तो ऐसे आपको बात करना पड़ेगा, वहां पे कुछ बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चंस के आंसर दिए और चले आए, तो वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये तो कुछ बोल नहीं रहा, जितना देंगे उतने में मान जाएगा, 20 का पकड़ा देगा, 10 का पकड़ा देगा, 15 का पकड़ा देगा, और उनको क्या है, उनको क्या है, उनको तो इंस्ट्रक्शन रहता है, जितने कम में हायर करोगे उतना बढ़िया है, राइट, उनको इंस्ट्रक्शंस रहता है कि टैलेंटेड भी होना चाहिए, और अगर बजट में कम में आ रहा है
कम मिलेगा। अगर वहीं पे 4 लाख कोई मांग रहा है और कहीं पे कोई 2 लाख मांग रहा है, और टैलेंट दोनों में सेम है, 2 लाख वाले को हायर कर लेंगे, 4 लाख वाले को नहीं हायर करेंगे। हाँ, लेकिन अगर वहीं पे कोई बहुत ज्यादा बोलने में एक्सपर्ट है, नॉलेज है उसके पास, राइट, तो वो 4 की जगह 6 भी मांगेगा ना तो उसको हायर कर लेगा वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा आगे क्लाइंट से बात कर सकता है, टीम में बात कर सकता है, दे कैन पुट द एफर्ट इन इन द प्रोजेक्ट, राइट, सो दे आर गोइंग टू हायर विद द 6 लाख LP, 6 LPA ऑल्सो। तो बोलो, अभी यहाँ पे नहीं बोलोगे, मेरे पास नहीं बोलोगे, टीचर के पास नहीं बोलोगे, राइट, यहाँ पे मैं क्या ही कर लूंगा आपका। ये तो बोर्ड एग्जाम नहीं है कि बोर्ड के टीचर, अरे रुक तेरे को प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ मैं तेरे को, तूने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछा, रुक मैं तेरे को प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ, 10 नंबर दूंगा, राइट। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नंबर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ प्रेशर, राइट। यू कैन आस्क फ्रीली क्वेश्चंस, राइट, जो भी दिन बचे हैं, जो भी आपके क्लासेस होंगे, यू कैन आस्क फ्रीली वट एवर द डाउट्स यू हैव इन योर माइंड, यू कैन आस्क इट, वट एवर द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, आस्क हिम। यही टाइम है, इंटरव्यू होने के बाद नहीं सीखोगे। जब इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपका कोई क्लास नहीं होगी, फिर उस टाइम पे आप क्लास के लिए रोगे कि सर मुझे कि ये नहीं आता, मेरा ये क्वेश्चन रह गया, मेरा वो क्वेश्चन रह गया, तो वो सब चीजें कोई दिक्कत आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। अभी भी शायद आप लोग Right. इसके बाद भी Yeah. एक इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास होगी, एचआर की क्लास होगी, राइट, तो उसमें भी आपको बोलना है, सारे डाउट्स पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है, नहीं तो वही But होगी, sir, वही होगी, जॉब तो but sir, मिलेगी, like, लेकिन वही है कि 15,000 की जॉब मिल hmm, जाएगी, फिर उसमें आपको खुश रहना पड़ेगा, 2 LPA की but sir, पढ़ाई sometimes, होगी। hmm, बोलिए। but sir, sometimes we face issue like this. Suppose, okay, they are offering like 20, and we are expecting 25 or 30, something above 20. Just a हम्म, scenario I'm putting up. हम्म, So, sir, but what happens? Suppose the company is very good. Means companies like Infosys, Wipro, means the brand name is there. So we also know this thing in mind, like we would be asking too much. Maybe they reject us on the basis of salary. Because if the company is just mediocre one, it doesn't matter even if they don't select us. But when the company is good, like Amazon, Wipro, something like that, then we have to be also cautious while asking. So, sir, what is the better way to deal No with this need to be a scenario? cautious. No need to be a cautious. If it's a big organization, they have a huge budget, right? They can give you. Okay, They can give you, but there is a some budget constraint, right? Then HR will directly call you. We have a budget constraint. We can't offer only this much, right? Then you can tell them, okay, I am of accepting that offer, right? There is a budget constraint, they are going to straightforward, they are going to tell you कि हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट है, हमारे पास इतना ही बजट है, हम इतने में ही देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप नहीं आओगे हम दूसरा हायर करेंगे, लेकिन इतने में हायर करेंगे। तो वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि लेट मी चेक विथ माय सीनियर, तो समझ जाओ कि वहां पे बजट है, आपका सैलरी बढ़ सकता है, राइट। तो वहां पे आपको बोल सकते हो कि नहीं मेरा इतना में नहीं हो सकता। वो आपको ऐसे ही बोलेगा कि नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है, इतना ही है, लेकिन फिर भी मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। तो समझ जाओ कि आपका डिमांड है जितना, उतना तो नहीं, बट जितना उन्होंने दिया उससे कुछ ज्यादा आपको दे देगा, राइट। तो ऐसे करने पे right, आप, sir. यू विल गेट सम मोर सैलरी, राइट। लेकिन जैसे Right. उसने बोल दिया कि हमारा बजट कंस्ट्रेंट है, हम नहीं दे सकते, हम दूसरा देख लेंगे, सॉरी फॉर दैट, तो आपको वहां पे बोल देना है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, इतने में ओके, राइट। लेकिन बजट Okay, sir. कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट। देखो बजट कंस्ट्रेंट रहेगा ना तो एचआर आपको सिंपली बोल देता है, क्योंकि कई कंपनी में रिस्ट्रिक्टली कहा जाता है कि इतने में ही हायर करना है, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है, तो वो उतने पे ही देखता है। लेकिन कई जगह पे बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपको दे सकता है। तो वहां पे आपको जज करना है कि देगा कि नहीं देगा, ठीक है। 2 बार 3 बार फॉलो अप लिया, 2 3 इंटरव्यू लिया आपका, समझ जाओ आपकी वैल्यू बढ़ गई, राइट, डिमांड अकॉर्डिंगली। एक ही इंटरव्यू लिया, एक ही इंटरव्यू पे फाइनल कर रहा है, दैट मीन समझ लो वहां पे बजट भी कम है उसके पास। लेकिन 2 बार इंटरव्यू लिया, आज एचआर राउंड लेंगे, कल मैनेजर राउंड लेंगे, ठीक है, टेक्निकल राउंड होगा, तो यू कैन आस्क मनी, राइट, सैलरी, क्योंकि वहां पे आपको पता लग जाएगा, हाव भाव से पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन वहां होने वाला है, एंड यू कैन आस्क दैट मनी, राइट।
कॉशियस Right, होने की sir. क्या ही जरूरत है, कॉशियस होने की क्या ही जरूरत है, बहुत कॉशियस होने से भी बहुत हाँ, नुकसान इंडिया की तरह मैच हार सकते हैं, लाइक ओवर है। कॉशियस, टुक 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 टुक, राइट सर। हाँ, तो बहुत कॉशियस भी नहीं होना है, फिर 15,000 का नौकरी मिलेगी, फिर वो ओवर कॉशियस। ठीक है, तो फिर यस वो कोई सर। मतलब नहीं है, 15,000 ट्रैवलिंग में खत्म हो जाएगा। यस, लैंग्वेज इज मैटर करता है, लैंग्वेज मैटर करता है, बट नॉट दैट मच, बहुत ज्यादा नहीं करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करता है, ये नहीं कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा या आपको जॉब ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज मैटर करता है, लैंग्वेज की वजह से आपकी सैलरी थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अच्छी लैंग्वेज बोलोगे तो थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम बोलोगे तो जॉब मिलेगी। लेकिन बहुत सारे कंपनी में लैंग्वेज कंस्ट्रेंट नहीं होती है, जैसे कि आपको प्लांट प्रोडक्शन कंपनी है, देयर इज नो लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, इफ यू नो द मराठी, पंजाबी, गुजराती तो भी चलेगा। अगर वो गुजरात की कंपनी है और गुजराती आता है आपको, आपको सबसे पहले उठा लेंगे वो। महाराष्ट्र में है, आपको मराठी आता है, प्लांट में है, मराठी आता है, यू आर गोइंग टू बी हायर्ड देयर। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग मराठी में ही बात करते हैं, तो आपको मराठी में ही उनको और अच्छा हो जाता है। राइट, बहुत सारे कंपनी में तो ऐसे भी रहता है कि यू शुड नो द लोकल लैंग्वेज। जैसे कि प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू शुड नो द लोकल लैंग्वेज, बिकॉज यू हैव टू डील विद द सम देयर समवन हु इज डोंट नो इंग्लिश, डोंट नो हिंदी, they only talk with the local language, so you have to speak with them with the local language also। जैसे कि अब सिक्योरिटी गार्ड है, राइट, एंड सिक्योरिटी गार्ड के केबिन में उनका कैमरा का इशू है या सिस्टम का इशू है, आप उससे जाके अंग्रेजी में बात करोगे तो क्या ही रिप्लाई करेगा सिक्योरिटी गार्ड, राइट। अगर लेकिन आप उससे हिंदी में बात करोगे या लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो दे आर वेरी हैप्पी, राइट, और वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा। तो बहुत जगह पे ऐसे बैरियर्स हैं, तो ये जॉब के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वी नीड इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। मेजर जगह पे इंग्लिश चलती है, लोकल लैंग्वेज की बहुत कम जगह पे जरूरत पड़ती है। ओके, चलो बहुत हो गया, ऑलरेडी 11, इट इज ऑलरेडी 11, राइट। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब थैंक यू सर। क्वेश्चन। ओके, सीसीएनए मैं नहीं पढ़ाता, सीसीएनए मैं बेसिक नेटवर्किंग पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे नेटवर्क डोमेन में इतना मैंने जॉब नहीं किया, तो मैं Sir, what time you teach in networking, sir? What time? What is the best timing, sir? नेटवर्किंग मैंने Yes, बताया ना, sir. मैं एक ही बैच लेता हूँ, अभी आपका चल रहा है, आप ही का चलेगा इस वीक, राइट। नेक्स्ट वीक अब जो दे देंगे वो मैं पढ़ा देता हूँ। Sir, you teach very good. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगता है आपका सुनने में, sir. थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके, ओके, बाय बाय। सर गाइडेंस देने के लिए थैंक यू। वेलकम, बाय।